Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. Today's chapter is going to be very interesting and we are going to start with a very new chapter and that is known as about the thyroid pharmacology. Now हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में we have a presence of a very important gland and that gland is known as our thyroid gland. Now we know from our basics of physiology कि ये जो हमारा thyroid gland होता है that is producing or we can say it is secreting two important thyroid hormones. The very first one is known as a T3 and the second one is known as a T4. Now जब भी किसी पेशेंट में T3 and T4 की जब डेफिशिएंसी होती है that condition is known as hypothyroidism. एंड जब भी किसी पेशेंट में T3 एंड T4 का लेवल जब बढ़ जाता है दैट कंडीशन माय डियर फ्रेंड इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म as well as hyperthyroidism, we need to have a proper knowledge about our thyroid hormones. We need to understand कि ये जो thyroid hormones होते हैं ये हमारा थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज बेसिकली कैसे करता है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ आवर थायराइड हार्मोन. सो इन आवर टुडेज वीडियो प्रेजेंटेशन we are going to start with a very basic of our thyroid pharmacology. So let me give you a brief review of all those things we are going to cover up in our today's video presentation. So in our today's video presentation, the very first concept that we are going to deal with is the location of our thyroid gland. Then we will see कि ये जो हमारे hormones होते हैं that is T3 and T4 ये हमारे thyroid gland में synthesize कैसे होते हैं. So the second point we are going to cover is the synthesis of our thyroid hormones and finally we are going to understand the regulation of the release of our thyroid hormone. So without wasting any further time, let us get started with the location of our thyroid gland. So when we start with the location of our thyroid gland, हमें यह पता है कि जो हमारा thyroid gland होता है that is present in our neck region. Now the question is कि neck region में तो present है बट नेक रीजन में एग्जैक्टली कहाँ पे ये प्रेजेंट है लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक एंड इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू अवर लैरिंग्स. सो एज यू कैन सी हियर इज अवर ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अवर थायराइड ग्लैंड. नाउ ये जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू अवर लैरिंग्स विच इज वेरी वेल सीन इन दिस पर्टिकुलर इमेज. नाउ जब मैं थायराइड ग्लैंड को देखता हूं आई सी कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है दैट इज हैविंग कंसिस्टिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट लोब्स, द लेफ्ट लोब एंड द राइट लोब. नाउ ये जो लेफ्ट लोब होता है एंड राइट लोब होता है दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज isthmus. So thyroid gland has a two lobes and both the lobes they are connected with the connective tissue known as isthmus. Now let us dig down into details of our thyroid gland के अंदर क्या basically present होता है. So when I see कि thyroid gland के अंदर we have a very important structural and functional unit of our thyroid gland and that is known as thyroid follicles. Now let us see कि ये जो thyroid follicles होते हैं ये दिखते कैसे हैं. So as you can see on your screen, here is a beautiful image of our thyroid gland. So जब हम thyroid gland के अंदर देखते हैं so we see कि there are some big structural and functional units present inside our thyroid gland and that particular structural and functional unit my dear friend is known as thyroid follicular cells. Now जब हम thyroid follicular cells की बात कर रहे हैं we know कि ये जो thyroid follicular cells होते हैं उसके जो लाइनिंग में जो cells present होते हैं that is known as cuboidal epithelium.
So the thyroid follicles, they are aligned with the cuboidal epithelium. So as you can see on your screen कि यहाँ पे we have the follicle and follicle के बाजू में you can see a brown color structures and that brown color is nothing but that is a lining of our cuboidal epithelium. Now can you see कि ये जो follicles होते हैं इसके बीच में एक empty space present है. Now ये जो empty space present होती है इसके empty space में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. So that kuch na kuch is nothing but it is our glycoprotein and that glycoprotein, my dear friend, is known as thyroglobulin. Now thyroglobulin के ऊपर we have very different kind of amino acid and उसमें से we need to understand कि एक amino acid होता है that is very special and it is having a role in the synthesis of our thyroid hormone and that amino acid which is present on our thyroglobulin that is known as our tyrosin. Now आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि चलो कि हमारे पास we have the glycoprotein and that glycoprotein is our thyroglobulin. Now the question is कि thyroglobulin produce कौन करता है? So the answer is this thyroglobulin is synthesized by our cuboidal epithelium. So the cuboidal epithelial cells, they will synthesize the glycoprotein known as thyroglobulin. Now just look at this image very carefully. हमें ये इमेज में कुछ बड़े सेल्स दिख रहे हैं and that big cells are known as follicular cells. Can you notice there are some small cells which is present just besides our follicular cells, and this particular cells, my dear friends, are known as C cells. Now there is a presence of our para-follicular cells जिसे हम C cells भी बोलते हैं and this C cells they are secreting a very important peptidal hormone and that peptidal hormone is known as thyrocalcitonin. Now what is the nature of our thyrocalcitonin? तो ये जो हार्मोन होता है that is hypocalcemic in nature. हाइपोकैल्सेमिक का मतलब होता है कि ये जो हार्मोन होता है that is reducing the level of calcium inside our human body and this hormone, my dear friend, is produced by our parafollicular cells. But we need to focus on our follicular cells because we need to synthesize our T3 and T4. So let us understand the main concept कि ये जो T3 and T4 होता है वो हमारे फॉलिकुलर सेल्स में सिंथेसाइज कैसे होता है. तो हमें ये पता है कि कोई भी चीज अगर हमें बनानी है तो वी नीड अ प्रॉपर रॉ मटेरियल. सो वंस अगेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अवर थायराइड हार्मोन वी नीड द प्रेजेंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. Very first important raw material is our tyrosine and the second one is known as our iodine. नाउ टाइरोसिन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था कि ये जो टाइरोसिन होता है दैट इज अ अमीनो एसिड and that is present on our glycoprotein. And what was the name of that glycoprotein? The name of that particular glycoprotein was thyroglobulin. तो चलो हमको सिंथेसाइज करने के लिए टाइरोसिन चाहिए था. सो टाइरोसिन हमारे पास है. Now we need to focus कि हम second raw material कहाँ से लाए and that second raw material is our iodine. Now just think कि iodine हमारे बॉडी में कहाँ से आ सकता है. The answer is very simple. ये जो आयोडीन होता है वो हमें डाइट के वजह से मिलता है. सो वी नो कि जो हमारा डाइट होता है हम डाइट में डेफिनेटली सॉल्ट कंज्यूम करते हैं एंड आप देखोगे कि ये जो सॉल्ट होती है दैट इज आयोडीनेटेड सॉल्ट. सो द मेजर सोर्स ऑफ अवर आयोडीन इज अवर सॉल्ट. सो फॉर द सिंथेसिस हमें जरूरत है टाइरोसिन की, हमें जरूरत है आयोडीन की. तो दोनों के दोनों रॉ मटेरियल हमको मिल गए हैं. सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ अवर आयोडीन और वी कैन से फॉर द सिंथेसिस ऑफ अवर थायराइड हार्मोन द आयोडीन मस्ट एंटर इनटू अवर फॉलिकुलर सेल्स. नाउ जो आयोडीन प्रेजेंट होता है
that is not present in the form of iodine directly. It is present in the form of iodide. And ये जो iodide होता है, that is having a charge, and that charge is negative. So the iodide present in the circulation will enter into the follicular cell. Now let us understand this particular process in detail. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेड कलर का इमेज दिख रहा है, दैट इज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड वी नो कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे आयोडाइड प्रेजेंट होता है, वी नीड टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर आयोडाइड आयन इनटू अवर फॉलिकुलर सेल्स so that we can synthesize our thyroid hormone. But my question to you is कि ये जो iodide है, can this iodide directly enter into our follicular cells? The answer is no. Now the question is why. हमने अभी पढ़ा है कि ये जो iodide होता है, that is having a charge, and हमें ये पता है कि जो हमारा सेल होता है, that is restricting our charged molecules to get inside our cell. So for this transportation of our iodide into our follicular cells, we need to have a specialized system, and that particular system, my dear friend, is known as sodium iodine symporter. So with the help of sodium iodine symporter, जो हमारा iodide है, that will enter into our follicular cell. एंड मोर प्रिसाइसली सबसे पहले ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आएगा. नो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में वी हैव अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवर आयोडाइड. नाउ दिस आयोडाइड नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अवर आयोडीन, एंड देन दिस आयोडीन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्प्टी स्पेस, जहां पे ये आयोडीन रिएक्ट करेगा विथ अवर टायरोसिन रेसिड्यूज. So we need to have some kind of enzyme which is converting our iodide into iodine, and this conversion of iodide to iodine is carried away by a very specialized enzyme, and that name of that enzyme is thyroid peroxidase. So with the help of our enzyme, that is thyroid peroxidase, ये जो iodide है, that is getting converted into iodine, and now ये जो iodine है, that can react with our tyrosine, and we will see कि ये जब reaction होता है, how this reaction is giving rise to the synthesis of our T3 and T4. So the iodide has entered into the cuboidal epithelial cell. ये जो iodide है, उसको हमने iodine में convert भी कर दिया, and what was the name of that enzyme? The name of that enzyme was thyroid peroxidase. Now can I say कि ये जो empty space है, that empty space is having our iodine. Now हमने अभी पढ़ा था कि ये जो empty space होती है, वहाँ पे we have a very important glycoprotein, and that glycoprotein is known as thyroglobulin. So can you see कि ये जो empty space है, वहाँ पे you can see a straight lined structure. That straight lined structure is nothing but it is our thyroglobulin, which is our main glycoprotein. Now उसके ऊपर यानी कि thyroglobulin के ऊपर, can you see that black colored dots? That black colored dot is nothing but that is our amino acid, and that amino acid, my dear friend, is known as a tyrosine. Now ये जो iodine होता है, that will get attached to our tyrosine residues, and this particular process is known as a very important organification phase. So once again coming back to our image, हमने ये बोला कि ये जो iodine है, this iodine will react, or we can say this iodine will get attached to our tyrosine residues, which is present on our thyroglobulin, and this attachment का एक phase का नाम है, and that particular phase is known as a phase of organification. Now the iodine gets attached to our tyrosine residues, and this particular phase is known as organification phase. Now कोई ना कोई इसमें एक mediator होना चाहिए to carry out this particular phase.
And once again, we have a very specialized enzyme, and once again, we have the presence of thyroid peroxidase, which is producing this particular effect. That is कि ये जो iodine है वो tyrosine residues के साथ attach हो जाएगा, and that particular phase is once again carried out by our enzyme, that is thyroid peroxidase. Now ये जो iodine होता है ये तो कनेक्ट हो गया, ये अटैच हो गया टू अवर टायरोसिन रेजिड्यूज. नो टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ जब ये अटैच हो जाता है, देयर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फेज, एंड दैट फेज माय डियर फ्रेंड इज नोन एज अ कपलिंग फेज. नाउ ये जो कपलिंग फेज होता है, दैट इज आल्सो मीडिएटेड बाय अवर एंजाइम, एंड दैट इज thyroid peroxidase. Now let us understand all these particular steps with the help of a easy demonstration. So you can see कि ये जो स्क्रीन पे जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, that is our thyroglobulin, and thyroglobulin के ऊपर we have some small black colored structures, and that black colored structure is known as our tyrosine residues. So first step क्या था कि ये जो iodine है that is going to get attached to our tyrosine residue. नाउ जब एक आयोडीन हमारे टायरोसिन के साथ जुड़ जाता है, दैट इज नोन एज MIT, एंड दैट इज नोन एज मोनोआयोडोटायरोसिन. नाउ अगर हमारे टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अगर दो आयोडीन जुड़ जाते हैं, then that will result into the formation of DIT, and that is known as diiodotyrosine. So as you can see on your screen, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे we have the attachment of our one iodine molecule with our tyrosine residue, and that will result into the formation of MIT. एंड उसके बाजू में वी कैन सी कि दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हमारे टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ आपस में जुड़ गए हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ DIT, एंड दैट इज डाइआयोडोटायरोसिन. नाउ हमने ये फेज को क्या नाम दिया था? दिस पर्टिकुलर फेज वाज नोन एज द फेज ऑफ ऑर्गेनिफिकेशन. Now the second phase is known as the phase of a coupling. Now what do we understand by this coupling phase? So as you can see कि यहाँ पे जो MIT है and DIT है ये साथ में आपस में जुड़ जाएंगे, and this particular आपस में जुड़ना जो phase होता है that is known as a coupling phase. So whenever MIT, that is monoiodotyrosine, is getting combined with our DIT, that is diiodotyrosine, we get our first important hormone, and that particular hormone, my dear friend, is known as T3. and T3 का क्या फुल फॉर्म है? T3 का फुल फॉर्म है ट्राइआयोडोथायरोनिन. नाउ जब भी DIT एंड DIT साथ में जुड़ जाते हैं, that particular phase, or we can say it will give rise to the synthesis of our second important thyroid hormone, and that second important thyroid hormone is our T4, and that T4 is known as tetraiodothyronine. and ये जो T4 होता है इसका एक दूसरा भी नाम होता है, that is our thyroxine. So coming back to our image, यहाँ पे जो मिडल में आपको दिख रहा है that is the our DIT. So एक DIT मॉलिक्यूल जब दूसरे DIT मॉलिक्यूल के साथ कपल हो जाता है, it will give rise to our T4 hormone. And when one MIT is getting coupled with two molecules of our iodine, that is our DIT, it will result into the formation of our T3 hormone. So सबसे पहले there will be the phase of organification. Then organification होने के बाद there will be a coupling phase, and finally there will be the release of our T3 and T4 after the cleavage. Now let us understand this particular point. हमने ये पढ़ा कि ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिफिकेशन वाला फेज होता है, जो इम्पोर्टेंट कपलिंग वाला फेज होता है, ये हमारे जो एम्प्टी स्पेस है उसमें हो रहा है. नाउ जब भी हमारे बॉडी में T3 एंड T4 का जब रिलीज होगा,
कैन आई से कि ये जो पूरा का पूरा थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है दैट विल नीड टू गो आउटसाइड अवर सेल. नाउ आउटसाइड ये कैसे जा पाएगा? सो फॉर दैट वी नीड टू प्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो ये जो पूरा का पूरा जो थायरोग्लोबुलिन होता है that is getting engulfed by our cuboidal epithelium, and cuboidal epithelium जब इसे engulf कर लेता है we also need to cut this particular thyroglobulin so that जो हमने T3 और T4 बनाया है that can get released into our blood. So, जैसे ही ये T3 एंड T4 जब हमारे पूरा का पूरा ये जो थायरोग्लोबुलिन अंदर आ जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर, देयर विल बी डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एंड ये जो डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम है it will cleave our thyroglobulin at different sites, and it will get result into formation of our T3 and T4. and ये जो T3 and T4 जो रिलीज हुआ है आफ्टर अवर क्लीवेज, आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, दिस विल गेट रिलीज्ड इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम, एंड जो ब्लड स्ट्रीम में T3 एंड T4 है देन इट कैन वर्क ऑन इट्स टारगेट रिसेप्टर्स. So once again, so there will be release of our T3 and T4 after the cleavage. Now let us understand कि ये जो रेगुलेशन होता है of the release of our T3 and T4, इसको रेगुलेट कौन करता है? So we have the very first important hypothalamus. So hypothalamus is going to release something known as thyrotropin releasing hormone, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRH बोलते हैं. Now ये जो TRH होता है that will stimulate our anterior pituitary, and anterior pituitary is going to release TSH, and the name of that TSH is known as thyroid stimulating hormone. नाम से ही पता चलता है कि ये जो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा, एंड जैसे ही थायराइड ग्लैंड हमारा स्टिम्युलेट होगा there will be release of lots and lots of T3 and T4. So that's it for our today's video presentation. In our next video presentation, I will tell you a very important relationship between our TSH level and the level of our thyroid hormone, and I will tell you what is the main important signs and symptoms if a patient is suffering from hypothyroidism or if the patient is suffering from hyperthyroidism. And then we will going to see a very important concept about our different drugs which is going to be useful in the treatment of our condition, that is hypothyroidism as well as hyperthyroidism. So see you in the next video lecture. अगर आपने वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा है, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video lecture with more such crystal clear concept. Till then, see ya, bye bye, have a good day.